અમદાવાદના ભાટ ખાતે આવેલી EDII સંસ્થાના 44મા સ્થાપના દિવસની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં સંસ્થાના પૂર્વ પ્રેસિડેન્ટ કિશોર ખરાત અને ડાયરેક્ટર જનરલ ડોક્ટર સુનિલ શુક્લા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ પ્રસંગે સફળ ઉદ્યોગ સાહસિક કેવી રીતે બનવું આ વિષય પર માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું, તો સાથે 55 સફળ તાલીમાર્થીઓની સંઘર્ષ ગાથા દર્શાવતા 2 કોફી ટેબલ પુસ્તકોનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું। તો કાર્યક્રમમાં વક્તાઓએ ભારતના અર્થતંત્રમાં ઉદ્યોગ સાહસિકોના મહત્વ અને सरकारनी नवी नीतियों વધતી તકો વિશે વિસ્તૃત ચર્ચા કરી હતી। सक्सेसफुल करना ये EDII जैसे ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं टेक्निकली, उनको कैसे चैलेंजेस फेस करना है, क्या कैसे बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, इसके जो भी ये यहाँ पे ट्रेनिंग्स देते हैं उससे ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रही है और वो हमारे कंट्री में बहुत ज़रूरी है। देश के विभिन्न प्रांतों में एजुकेशन में, सोशल जस्टिस में, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर में हर जगह अपने अपने कार्यक्रम लॉन्च किए हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आज जो पिछले 44 वर्ष से जो EDI ने ये कार्य की जिम्मेदारी ली है, बड़े अच्छी तरह से हम कर रहे हैं और नए नए जो उद्यमी आ रहे हैं उनके अंदर बहुत प्रतिभा है, क्षमता है और आज का इकोसिस्टम उनको काफ़ी एनकरेज कर रहा है। यही आवश्यकता है